I'm Dr. Mukesh Parik, and I'm live. As I informed you all that I will be live today at 8 o'clock. So, those who had already been informed should come. Hello. How many of you are attending the class? Should we start? Okay. It would be fine if you come. Shivangi, Vivek Shukla, that's great. Shubhra is there. Mallika Yadav, that's great. Hello everybody, good evening. Keep reporting so that I can start the class. Shivangi Gandhi, that's great. Hello everybody. You should press this like button, and you should also share the video. Keep sharing it so that maximum number of students can be benefited of it. I'm also sharing it. Yeah. You should press this like button and keep sharing. It's already 2 minutes. Let us start then. So, structuralism, as the word tells us, that it is based on linguistics. You will be surprised to know that this topic is not tough for a teacher to explain when he or she starts a class, because he already have prepared, but the concept comes to a very problematic phase, because as you know that it is a part of philosophy actually, and it becomes quite tough for a teacher when he tries to explain, for example, suppose I know that what structuralism is, but then without the basic concepts clear to some of my students, it is very tough for a teacher. So then what does a teacher do? He starts creating certain situations so that the teacher can explain the things to the larger number of students. Structuralism is actually a part of philosophy in which they consider that there is nothing in the language. Language is simply the combination of word and its meaning, and the meaning is assigned by a particular community, a particular person, in a particular situation. So exactly the words do not contain anything. And what we consider that throughout around us, yes, I can explain to you what is the exact. Actually, structuralism starts from Aristotle. I have with me and all, so that I can satisfy to your queries. First of all, it starts from Plato, and then his disciple. Everything in literature, everything in philosophy. Most of the times, you must have noticed that these things, they start from Greek culture. So from the Western point of view, first of all, Plato and then Aristotle, they talked about what is a structure. So in this book of M.H. Abrams' Handbook of Literary Terms, it is written that almost all literary theories beginning with Aristotle have emphasized the importance of structure, conceived in diverse ways in analyzing a work of literature. So I think you are satisfied now that it starts from Aristotle, and when I say Aristotle, then I always say that somewhere Aristotle's theories are somewhere responses of Plato.
But in the modern sense, there was a Swiss linguist. His name was Ferdinand de Saussure. Ferdinand de Saussure is a Swiss linguist, and he came up with the theories of modern linguistics. Particularly, he wrote an essay. Its name was "Course in General Linguistics." Course in General Linguistics. It was published in 1915. Actually, there were series of lectures. This essay was not exactly published, as a book form in the very beginning. Actually, he delivered certain lectures, so his students then they collected the lectures, and then it was published. So today we have this lecture in the name of a book form, which is called Course in General Linguistics. So in this today's session, because as I already have intimated you all people, those who are serious students, that I am going to have 3 or 4 classes of structuralism. Even I particularly personally I feel that uh, 3 classes are not sufficient. I think I require more than 10 classes if I want to explain, to all different writers. For example, you must be curious, like how many different writers are included in this particular, literary criticism or part of theory. Jonathan Kuller, Levi Strauss, this Ferdinand de Saussure. These are the major writers, but there are other writers also, which we cannot avoid, because structuralism is such a literary phenomena that actually, though we study it in philosophy also, but it is also studied in literature. So there are other writers, whose writings and the kind of terminology they have given, which is, that terminology is important, from examination point of view. So we will be discussing Ronald Barthes, Gerard Janet, Julia Kristeva, and there is another writer, Todorov. So then there are other writers also in between. So overall, there are 7, 8 writers, which we will be discussing. Not today. Today, I will simply be just talking about like what is the basic of structuralism. How a common student can understand structuralism. Good evening, everybody. My mind is more busy, in teaching the concept instead of, responding your good evenings and all. I'm so sorry for that. So now I'm reading certain points which I have prepared so that you can understand. And let me give you a very brief idea, like what structuralists say about language. They say that word as such do not contain any meaning. What is the first postulation? That words in themselves have no meaning, and a single word always has some relational value. A word is always understood in the relation with the other word. Number one. Number two, that whatever meaning we assign to a particular word is actually a kind of combination or kind of a difference between the two, and we understand one word by comparing it with the other word. Theory places, can you discuss bilingual? Yeah. स्ट्रक्चरलिज्म में ये कहते हैं कि एक ये जो लैंग्वेज है हमारे पास, वट एवर लैंग्वेज वी हैव, लैंग्वेज डज नॉट हैव अ मीनिंग बिकॉज मीनिंग इज असाइंड by our conventions, by our society, by our preconceived ideas about something. This is the basic point of structuralism. Structuralism ये कहता है कि अगर मैं कहूं कि मेरे हाथ में एक बुक है, I have a book in my hand, then the people who understand the meaning of book, or in their culture, book means some pages bound together. They will understand this word book. But the people who do not understand, or those who do not have this word in their language, they will not be able to understand. इसका मतलब ये हुआ, it means that कि meaning is not there in the language. This is structuralism. From here we start. Okay. So, and there is another analogy. एक और उदाहरण है, एक और एग्जाम्पल है, जो एक हमारे बहुत बड़े थियोरिस्ट है जिनका नाम है टेरी ईगल्टन. टेरी ईगल्टन की पीटर बेरी की बुक है बिगिनिंग थ्योरी.
बिगिनिंग थ्योरी बुक में उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया. ही हैज गिवन अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, एंड दैट एग्जांपल इज द एग्जांपल ऑफ चिकन एंड एग. कि जब हम लोग एग की बात करते हैं तो एग का मतलब क्या हो गया कि एग से चिकन बनेगा. फॉर एग्जाम्पल पूरे घर की बात करें, सो द हाउस, द होल बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स. सो ब्रिक में अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंग इज इन द होल हाउस. तो यहां से स्ट्रक्चरलिज्म स्टार्ट होता है कि देयर आर टू थिंग्स. वन थिंग दैट इन इटसेल्फ वर्ड डज नॉट हैव अ मीनिंग. और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि वर्ड्स व्हेन दे कंबाइन, वर्ड्स व्हेन दे are compared with the other words, they start giving us meaning. And second thing, that meaning is not there, even in the differentiation also, even in the relational values of the word, there is no meaning. Meaning है हमारे दिमाग में, हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में. और इस चीज को समझाने के लिए then all the other writers, whether it is Levi Strauss, और चाहे वो रोनाल्ड थीज है with his famous 5 quotes and his book on structure mythologies, जिसका नाम है the important book by रोनाल्ड बार्थेस is mythologies, जिस पे लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था. So all these writers are trying to discuss exactly that meaning is actually assigned by us. तो अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा what I am reading from the text. In structuralist approach to literature, there is a constant movement away from the interpretation of the individual literary world. Instead, they show a parallel drive towards the understanding the larger abstract structures which contain them. This is the technical language. It means structuralists, they do a practice. What they do, they don't understand. They say that there is no meaning in the individual word, but actually meaning is assigned with when the larger entity comes in front of us. And what is the larger entity? Word में अपने आप में कोई meaning नहीं है, but when it gets combined with the other words and we get a sentence, तो हो सकता है सेंटेंस में अपने आप में कुछ मीनिंग हो, और उस सेंटेंस से when we compare with the other sentence, then the other sentence, then the other sentence, then the whole building of the whole text, then we can understand that overall there is some meaning. अच्छा, फिर उस टेक्स्ट का भी अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, and in that text also there is no meaning. उस टेक्स्ट के अंदर भी वो किस कल्चर में लिखा गया है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा गया है, वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, then the meanings are taken out of that particular thing. इसको बोलते हैं structuralism. So again I read that the first thing of structuralists, that they try to move constantly away from the interpretation of the individual literary world. Instead, they move away from the individual literary world to the abstract things. So abstract things का क्या मतलब हो गया कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक जैसे मैंने बोला कि भाई राइटर हैज गिवन एन एग्जांपल. जैसे मान लीजिए मुझे ऐसे कहना है कि भाई मुंबई टू गोवा जाने वाली कौन सी ट्रेन है. तो somebody says that, और वो particular day है. In that particular day, suppose that train is not scheduled and instead of train एक मालगाड़ी जा रही है वहां पे. जैसे अभी गुड्स ट्रेन अभी चली थी कोरोना में, आपको पता होगा that और सपोज 5 मजदूर, 5 लेबर क्लास पीपल आर गोइंग फ्रॉम मुंबई टू गोवा इन दैट पर्टिकुलर ट्रेन. इसका क्या मतलब हुआ कि ट्रेन जो शेड्यूल होती है उसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं हो सकता, उसकी जगह कोई और ट्रेन आ जाए. रूट का भी अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है क्योंकि दे कैन आल्सो चेंज द रूट. इसका मतलब है कि मीनिंग वी असाइन, वी गिव. चीजें बदल सकती हैं, वर्ड्स कैन आल्सो चेंज. वर्ड्स में अपने आप में अगर मीनिंग होता तो समटाइम्स वी से दैट आई एम लिविंग इन माय हाउस. अब हाउस की जगह आई कैन आल्सो यूज समटाइम्स इन अ ह्यूमरस वे दैट आई एम लिविंग इन माय पैलेस. सो इट मींस whatever meaning comes out of us, whatever meaning we are assigning to it, it depends upon the individual. Words are devoid of any meaning. Second point is structuralism is opposite to new criticism. This is very important for all of us to understand that. First of all, let us understand what is new criticism. As you all know that with the advent of the 20th century, जब 20th century start हुई थी तो new criticism आया था. तो न्यू क्रिटिसिज्म में क्या बताया गया था? न्यू क्रिटिसिज्म में बताया गया था कि
जो टेक्स्ट होता है उसमें वर्ड में मीनिंग है, एंड टू टू यू नो ब्रिंग आउट द मीनिंग वी शुड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट. So they used to do the close analysis of the text. So please take class here, because most, okay, that we will see okay, whether I have to take the class on YouTube or Facebook. It doesn't matter. I will take on both the places. So अभी बात करते हैं कि second point which is important from your examination point is that one thing that structuralism is opposite to the new criticism. तो पहले पता होना चाहिए कि what is new criticism. New criticism means a kind of close analysis of a text. अब जब हम close analysis of text करते हैं, it means we somewhere think that there is a meaning in the word. तो वो word के meaning को ढूंढना ये न्यू क्रिटिक्स का काम है. बट स्ट्रक्चरलिस्ट क्या बोलते हैं कि वर्ड मीनिंग है ही नहीं. इसका मतलब ये हुआ कि न्यू क्रिटिक्स ये कहते हैं कि वर्ड में मीनिंग है. स्ट्रक्चरलिस्ट कहते हैं कि इसका मतलब है दीज आर टू ऑपोजिट थिंग्स. समझ में आ गया? 2 पॉइंट्स. फर्स्ट पॉइंट, द वर्ड में और सेंटेंस में इंडिविजुअल चीज में कोई मीनिंग नहीं है. एग में कोई मीनिंग नहीं है. ओवरऑल चिकन में मीनिंग है, हैन में मीनिंग है. मीनिंग भी तब है जब आप उसको सोशली कंस्ट्रक्ट करते हो. दूसरी सेकंड थिंग इज दैट इट इज ऑपोजिट टू द न्यू क्रिटिसिज्म. थर्ड पॉइंट इज न्यू क्रिटिसिज्म वाज रिलेंटलेसली टेक्स्ट बेस्ड and tended to exclude wider questions, abstract issues and ideas. जब हम लोग न्यू क्रिटिक्स का एनालिसिस करते हैं तो they used to consider a poem, and they used to analyze the metaphors, the other aspect like similes and the tension, personification, paradoxes, all these things they used to study in a text, and then they used to come out with a particular meaning. तो अब ये स्ट्रक्चरलिस्ट क्या कहते हैं कि नहीं, मीनिंग इज ओवरऑल द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया. एब्स्ट्रैक्ट आइडिया में क्या है कि वो वाइडर क्वेश्चन क्या है. फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझना होगा हम लोगों को. मैंने कहा ना ये टफ टॉपिक है. टफ इन द सेंस कि हम इसको कैसे समझें कि अपने आप में इन इटसेल्फ व्हेन वी टॉक अबाउट like suppose I am asked, मैंने किसी लड़के का नाम रख दिया राम. तो क्या वो लड़का राम हो गया? इसका क्या मतलब है कि उस लड़के का राम नाम रखते वक्त हो सकता है कि उसके एक्शंस बहुत खराब हो. इसका मतलब है कि नाम में कुछ नहीं रखा. वो जो शेक्सपियर की एक बहुत फेमस लाइन है ना, व्हाट इज देयर इन द नेम, that can be assigned to this particular work. के नाम में कुछ नहीं है. It depends upon कि वो वर्क कैसे करता है. जैसे लेट मी गिव वन मोर एग्जांपल. जैसे मैंने बोला टेक्स्ट. अब आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे पीटर बेरी की बुक में ऐसे लिखा हुआ है एक एग्जांपल कि एक आदमी टेक्स्ट को बोलेगा कि साहब ये तो कम्युनिटी चार्ज है. सो इट डिपेंड्स अपॉन लाइक व्हाट मीनिंग यू असाइन. एंड एक मैं लाइन पढ़ता हूं ताकि आपको समझ में आए कि लैंग्वेज में मीनिंग नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन द पर्सन. तो एक लाइन पढ़ता हूं, देखो. It has been said that there are 3 versions of every story: your version, my version, and the truth. But the case here is more complicated than that, since all the available terms are purely linguistic. There is no truth about these matters which exist securely outside language. इसका मतलब है कि मीनिंग तो लैंग्वेज के बाहर है, वर्ड तो हम केवल यूज करते हैं. इसीलिए समटाइम्स यू मस्ट हैव सीन दैट हम वी टेंड टू से कि आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्लेन दिस सिचुएशन. इसका मतलब है कि आवर ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, आवर ह्यूमन प्रीडिकमेंट इज दैट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस रियलिटी. जबकि न्यू क्रिटिक्स क्या कहते थे कि वी कैन अंडरस्टैंड रियलिटी विद द यूज ऑफ लैंग्वेज. तो स्ट्रक्चरलिस्ट ये कहते हैं कि लैंग्वेज में कोई मीनिंग नहीं है. लैंग्वेज अपने आप में एक बाइनरी सिस्टम है, और एक वर्ड का मीनिंग तब समझ में आता है जब दूसरा वर्ड उसके सामने हो. अच्छा, इसको मैं समझाता हूं. हियर लेट मी टॉक अबाउट 2 वर्ड्स व्हिच आर कॉल्ड सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. आपको समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? इफ यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट, यू कीप सेइंग सो दैट आई कैन कंटिन्यू द क्लास. एक सॉजो ने टर्म दी है सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड. सिग्निफायर का क्या मतलब होता है? दैट पर्टिकुलर वर्ड. फॉर एग्जाम्पल, आई से मैंगो, आई से कैट, आई से चेयर, आई से टेबल. ओके, तो अब टेबल जो है दैट इज सिग्निफायर. अब टेबल मेरे दिमाग में एक इमेज आएगी, एन इमेज विल कम इन माय माइंड,
and then I will understand like what is the meaning of table, what is the what is the meaning of mango. वो जो image create होती है, that is called signified. Suppose I say cat, तो cat is cat because cat is not dog. This simple explanation में सारा फर्डिनेंड डी सॉजर का कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप बिटवीन सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड. आप लोग इसको बोल के देखो मेरे पीछे पीछे, आर्बिट्रेरी रिलेशनशिप बिटवीन द सिग्निफायर एंड द सिग्निफाइड. तो सिग्निफायर मीन टू से द वर्ड and signified means say what meaning or what image occurs in our mind. It means signifier and signified के बीच में arbitrary relationship है. Now what is this arbitrary? Arbitrary mean to say which is not fixed. Okay, arbitrary mean to say not fixed. For example, why a cat is cat? Because a cat is not dog, a cat is not donkey, a cat is not an elephant. This is philosophical concept. Hello, everybody should write here that they are able to understand the point so that I can extend the class. Yes, signifier means name or word. That's correct. Again, I repeat so that you people can understand. For me, it is more important that I can make the class meaningful. It is not important for me that I extend the class or say I have more viewers and all. I am coming on this platform just because of my students, so that I can make them feel that they are in the classroom and they are connected to me. Okay, I repeat, what is language? It is the arbitrary relationship between a signifier and a signified. So, and who has decided that what is the image? If I say cat, but a Tamil student will not understand cat. Suppose in his mother tongue there is no word like cat. So it means images. We create, we see the things and then we come to know. हम अपने आप में ये सोच लेते हैं कि अच्छा इसका ये मीनिंग है, इसका मतलब है एक in a village, suppose a person does not go out of village, so in his particular culture, in his particular social, his particular religious setup, उसको जो भी चीज समझ में आ रही है that के थ्रू समझा, डिफरेंस के थ्रू समझ में आता है. वेरी नाइस. अच्छा एक लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल. बॉय कब समझ में आएगा बताओ? बाइनरी. यस, वी कॉल इट बाइनरी ऑपोजिशन. तो बाइनरी ऑपोजिशन, जो बाइनरी मींस टू, के वी ऑलवेज अंडरस्टैंड थिंग्स इन टर्म्स ऑफ टू. के बॉय का मतलब जैसे इस दुनिया में लड़की नहीं होती. सपोज वी डिड नॉट हैव girls in this world, then we could not have been able to understand what the exact meaning of a male or a boy is. इसका मतलब है कि we understand कि a boy is there because there is a concept of girl, there is a gender girl. It means we understand things in the difference. तो यहाँ से Saussure की linguistics start होती है. I hope it is you are able to understand it now. So मैंने क्या क्या पॉइंट बताए देखिए इतनी छोटी सी क्लास में अभी तक, कि स्ट्रक्चरलिज्म जो है, लाइक वन स्टूडेंट आस्क्ड मी लाइक फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट. सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्लेटो एंड एरिस्टोटल, particularly from it is possible to watch this lesson later. Yeah, don't worry, I will upload it on the YouTube, though I'm a bit ashamed of myself that I'm not using different techniques. I have never seen such a great English professor. Okay, thank you very much. But I feel, you look at me, I'm feeling that, I'm not a trained one. I'm not able to explain the things properly. So I'm always shy. Don't praise me. Keep sharing the videos so that, maximum number of students can understand. My level of explaining the things means, I don't want to show off my knowledge. I just want like student can understand it. अच्छा, टॉपिक पर आते हैं. पहला पॉइंट क्या था कि इट स्टार्टेड फ्रॉम एरिस्टोटल एंड प्लेटो. दूसरा पॉइंट क्या है कि स्ट्रक्चरलिज्म मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्स. थर्ड थिंग इज दैट चिकन और एग वाला मैंने एग्जांपल दिया, दैट फॉर these linguists, for structuralist linguists particularly, or for the structuralist people, or those people who are defining, explaining literature in terms of structuralism, individual words are not important for them. Larger and abstract things, what the overall literature is saying, and writing for them does not have any personal contact. उनके लिए writing जो है वो एक text बन जाती है, मतलब there is no emotional meaning attached to it. Language means words, system of words. जैसे
और तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि इट इज अगेंस्ट और ऑपोजिट टू द न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि इन द बिगिनिंग आपको नाम याद होगा, आई ए रिचर्ड्स ने, है ना, और इन्होंने मिलकर के एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था विच वाज अवे फ्रॉम द बायोग्राफिकल डिटेल्स ऑफ अ राइटर। सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि न्यू क्रिटिसिज्म क्या होता है। न्यू क्रिटिसिज्म आई ए रिचर्ड ने स्टार्ट किया था। उसने कहा था, ही सेड दैट टेक्स्ट का क्लोज एनालिसिस करके हम मीनिंग को निकाल सकते हैं। किसी किसी बुक में, किसी पोएम में मीनिंग इज नॉट कमिंग फ्रॉम सोशल और पॉलिटिकल बैकग्राउंड। लेकिन ये क्या कह रहे हैं स्ट्रक्चरलिस्ट, ये कह रहे हैं कि नहीं, द मीनिंग इज समवेयर इन द सोशल एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड, मीनिंग इज देयर नॉट इन द टेक्स्ट। तो ये बात बहुत समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज दे कैन गिव यू एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस, कि न्यू क्रिटिक्स कहते हैं कि टेक्स्ट में मीनिंग है, एंड व्हाट दे आर सेइंग कि टेक्स्ट इज yes they are saying that meaning is outside the text। चलिए अब आप आगे बढ़ते हैं। फॉर स्ट्रक्चरलिस्ट, अच्छा, और मैंने क्या बताया आपको, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सिग्निफायर मीन्स दैट ऑब्जेक्ट एंड सिग्निफायर मीन टू से दैट इमेज which it creates, and the famous definition that language means the arbitrary relationship between the signifier and the signified। अच्छा, फिर एक दो टर्म और क्लियर करता हूं इस वीडियो में आज की क्लास में, और कल सभी लोग एग्जैक्ट 8 बजे आ जाना, ताकि मैं रोज आधे घंटे की 45 मिनट की क्लास, आई एम प्लानिंग दैट फॉर 4-5 days कंटिन्यूअसली आई विल रीड एंड prepare myself and inform you like what is this particular topic structuralism is। second two important terms are lang and parole। ये एग्जाम में भी आया था क्वेश्चन, एंड बहुत सिंपल है। लांग, LANGUE, जिससे लैंग्वेज वर्ड बना है। लांग मीन्स किसी को पता है तो बताइए। लांग मीन्स द सेट ऑफ रूल्स, द सेट ऑफ रूल्स मीन्स ग्रामर। तो लांग एक मीनिंग आपको पता होना चाहिए कि किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी कल्चर में जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर एक पर्टिकुलर ग्रामर होती है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स होते हैं, उसको अपन बोलते हैं लांग। ओके, and the second is parole। parole means actual use of the language, जैसे spoken English है। for example I have a set of rules with me। so जब कोई आदमी spoken बोलता है, suppose there is a person, when we go to a classroom, तो हम classroom में क्या करते हैं बताइए। when we go into a classroom, तो suppose in a language classroom the teacher is teaching us the grammatical rules। तो जो grammatical rules होते हैं उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लांग। और जो यूज करते हैं हम लैंग्वेज असल में, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब सॉजियो की लिंग्विस्टिक्स में बोलते हैं सेट ऑफ रूल्स को तो बोलते हैं लांग, और एक्चुअल यूज ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड परोल। तो ये दो वर्ड भी आपको और क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और दो टर्म और आज यूज कर लेता हूं, बिकॉज देन इन द कमिंग क्लासेस आई विल बी यूजिंग इंटरचेंजेबली दीज वर्ड्स, सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक। तो आज की सिंटैग्मेटिक एंड पैराडिग्मेटिक तो क्लियर नहीं करूंगा, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस ऑफ लैंग्वेज इन स्पीच एंड राइटिंग। करेक्ट, आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस क्या है, व्हाट यू लर्न इज लांग, एंड व्हाट यू, द वे यू यूज दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज इज कॉल्ड परोल। जहां तक मेरा मानना, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि फॉर स्ट्रक्चरलिस्ट determining the precise nature of the chicken is the most important activity, while for the new critic the close analysis of the egg is paramount। तो यहां पर ये राइटर ऐसे कहना चाह रहा है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू, कि ईंट का कोई मतलब नहीं है, मतलब है पूरे घर का। इसका मतलब है कि ग्रामर को के रूल को पढ़ने से आपको कोई मीनिंग क्लियर नहीं होगा। सिंक्रोनिक एंड डायक्रोनिक भी समझाऊंगा, बट नॉट इन टुडेज लेक्चर। ओके, तो अभी मैं क्या बात कर रहा हूं कि इंडिविजुअल ब्रिक हैज नो मीनिंग, बट व्हेन इट क्रिएट्स अ वॉल, एक वॉल का भी अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। व्हेन वी व्हेन वी कंस्ट्रक्ट 4 walls, when we construct a roof, then we call it a home। it means overall language is built upon many different things like words। अच्छा, word में भी फिर there are other structures which are important to understand a language। for example, phoneme है, phoneme means the smallest sound which we use, okay, and morpheme means the exact smallest letter जिसको आगे we cannot break। so there are so many different structures in a language: lang, parole, signifier, signified, syntagmatic, paradigmatic।
synchronic, diachronic. These are typical terms, and what they do in our exam, in our net and JR, they ask us these questions also. लेकिन मैं नहीं चाहता कि मैं आपको केवल questions can be आप लोग you can remember them, you can you can go by rote learning also, but by rote learning you won't be able to understand the concepts. चलिए आगे आते हैं. अब मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में Saussure के 3 एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट क्या है मीनिंग के. Saussure says 3 interesting things. First, meanings we give to things are purely arbitrary. These meanings are maintained by convention only. Words are unmotivated signs. ये क्वेश्चन में आया हुआ है कि who said that words are unmotivated signs? Signs मतलब SIGNS, मतलब वर्ड में अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है. Words are unmotivated signs and they do not have inherent meaning in themselves. Words are unmotivated signs. Language is a sign system. Language is not a reflection of the world and of experience. It means language is devoid of anything. Language is just a combination of words. We cannot say that in that particular language I have assigned my overall meaning, my experience, because something is always left when I'm using words. क्योंकि आपने कई बार महसूस किया होगा कि हम बहुत कुछ सोचते हैं, हमारे मन में बहुत सारे इमोशंस आ रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी हम उन इमोशंस को शब्दों में बयान नहीं कर सकते. Every different languages in the world have different concepts, different vocabulary, different synonyms, different antonyms. और हम कई बार देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर आइस इंग्लिश में 2-4 वर्ड्स मिलेंगे, बट if you go to the people of North Pole and South Pole, you will find that they have 30 words for snow. इसका क्या मतलब है कि अपनी रियलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए भी क्रिएट वर्ड्स, बट वर्ड में मीनिंग नहीं है. मीनिंग इज आउटसाइड समवेयर इन द एब्स्ट्रैक्शन ऑफ आवर फीलिंग्स. I hope it is clear to you. It is just a system which stands quite separate from it. Experience is different and language is different. Language does not give meaning to our experience. अगर अच्छा ये बात जब आपको समझ में आएगी ना, तो आपको let me give you an example कि जब स्ट्रक्चरलिज्म के लेक्चर खत्म हो जाएंगे, then we'll move to the post structuralism और deconstructionism. तो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की जो जन्म है, the birth of post structuralism lies in structuralism itself. क्योंकि स्ट्रक्चरलिज्म में somewhere they say that the things are binary, and to understand a language, to understand a concept, we need 2 things and their difference and their relationship. लेकिन इसी के अंदर डेरिडा का नाम सुना है आप लोगों ने? जवाब दीजिए. हैव यू हर्ड अबाउट जेक्स डेरिडा? जाक डेरिडा बोलते हैं फ्रेंच में. डेरिडा वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर. ही सेड, हेलो, कैन यू हियर मी? He said, yes. He said, he took this definition of Saussure. What is the definition? Arbitrary relationship between signifier and signified. So he just, got hold of a particular word, arbitrary. उसने arbitrary word को पकड़ लिया और उसने कहा कि अगर structure में meaning नहीं है, then there is no structuralism. इसीलिए you will be surprised that जो रोनाल्ड बार्थीस है ना, in his life, half of his books are written on structuralism and half of his books are written on post-structuralism. It means he changed his mind when he was trying to write about structuralism. In between, he started talking about post-structuralism. The reason lies in the fact that actually बहुत जल्दी ही लोगों को ये समझ में आ गया, इन फिलोसफर्स को, कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर को समझ करके किसी भी चीज को नहीं समझा जा सकता. स्ट्रक्चर से बाहर कोई चीज है. इसका मतलब एक्चुअल में देयर इज नो मीनिंग. दैट इज कॉल्ड डिकंस्ट्रक्टिव थ्योरी. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में ये कहा जाता है देयर इज नो मीनिंग. अब जब देयर इज नो मीनिंग हम कहते हैं ना, तो इसका मतलब है कि सिग्निफायर में भी कोई मीनिंग नहीं है, सिग्निफाइड में भी कोई मीनिंग नहीं है. मीनिंग इज इन बिटवीन द डिफरेंस, कि कैट इज कैट बिकॉज कैट इज नॉट डॉग. इसका मतलब है कि वो डिफरेंस में समवेयर इट इज स्लिपरी. स्लिपरी कैसे समझाता हूं? जैसे मैंने कहा कि कैट इज नॉट कैट बिकॉज कैट इज नॉट डॉग. कैट क्यों है? क्योंकि वो डॉग नहीं है. तो जब वो डॉग नहीं है तो डॉग क्यों नहीं? क्योंकि डॉग डोंकी नहीं है. इसका मतलब है कि इसको समझना थोड़ा मुश्किल है. अच्छा, लेट मी गिव यू अनदर एग्जांपल. जब आप लोग कोई चीज टाइप करते हो तो आपने देखा है पर्टिकुलरली कि जब हम राइट क्लिक करते हैं कंप्यूटर पे, अपने कीबोर्ड पे, तो वो थिसरस और सिनोनिम्स की लिस्ट आ जाती है. तो जब आप एक वर्ड के लिए एक और सिनोनिम चाहते हो, तो वी ऑलवेज हैव रेडीमेड सर्टेन लिस्ट
कि हट मीन्स हाउस, हाउस मीन्स, तो जब हम डिक्शनरी खोलते हैं तो वो हाउस का मतलब होम दे रहे हैं। अब होम पे गए सपोज, तो होम का मीनिंग सर्च कर रहे हैं तो दे से दैट अ काइंड ऑफ बिल्डिंग। जब बिल्डिंग को सर्च करेंगे, मान लीजिए किसी को मीनिंग नहीं आता है, वो बिल्डिंग सर्च करेगा तो डिक्शनरी उसको किसी और मीनिंग पे ले जाएगी। इसका मतलब है मीनिंग पर मीनिंग, मीनिंग पर मीनिंग, एक जगह फिक्स नहीं है कोई चीज। इसका मतलब है कि इस वर्ल्ड को समझना थ्रू लैंग्वेज इज टोटली इम्पॉसिबल, कहीं पर कोई मीनिंग नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो बेसिक चीज जो सॉजर ने कही है वही आगे जाकर के पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट ने कही है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट मीनिंग्स आर प्योरली आर्बिट्रेरी and meanings are maintained by the convention. Convention means social convention, religious convention and all. Second point of Saussure is meanings of a word are relational. वो भी हमने डिस्कस कर लिया आज की क्लास में कि there is a chain of binary oppositions, male, female, day, night, good, bad. These through these differences, through these opposites, we mostly try to understand a meaning. And the third thing is that I will be reading from a book. A Saussure language constitute our world. It does not record it or label it. Meaning is always attributed to the object or idea by human mind and constructed by and expressed through language. It is not already contained within the thing. वर्ड में मीनिंग पहले से मौजूद नहीं है, वर्ड के अंदर मीनिंग हम उसको देते हैं। तो यहाँ पे द राइटर हैज गिवन अस एन एग्जांपल ऑफ टैक्स, दैट अ पर्सन suppose he's rich and is paying the tax in a very casual manner, there is no burden on his pocket, then he will be saying that it's a community service. But suppose somebody who's very poor and it's very tough for him to pay the tax, then he will be saying it is खून चूस रही है गवर्नमेंट, they are sucking my blood. So for him, the blood here means that particular money. इसका मतलब है meaning is always relational, arbitrary, not fixed, not in the language itself. तो ये हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अब हम बात करते हैं आज की क्लास में कि सॉजर से ये स्टार्ट होती है। सॉजर की जो मेजर जो उनका ऐसे का नाम है, दैट इज कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। इट वाज पब्लिश्ड इन 1915। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट के स्ट्रक्चरलिज्म में एक और इंपॉर्टेंट क्रिटिक का नाम आता है एंड उनका नाम है एक रोमन जैकबसन। सो हो सकता है मैं कल की क्लास में आई विल बी टॉकिंग अबाउट रोमन जैकबसन। उनकी मेटाफर एंड मेटोनिमी की एक थीम है, राइट डाउन इट, रोमन जैकबसन and his concept of metaphor and metonymy. I will be discussing in the coming few lectures, and then I will be talking about Levi-Strauss, Claude Levi-Strauss, Claude Levi, Strauss, Strauss, and other writers of 1950s and 60s. अब ये Levi-Strauss जो है, that is again a very important writer. What he says that in our culture, because he's a mythological critic, he's a mythic critic. He says that we can also say that cultural critic. He wants to understand that whatever meaning is assigned in society, whatever meaning we assign to religion, whatever meaning we assign to our any action in the 8 o'clock will be the time. Every day in evening 8 o'clock I'll be coming, and it depends, like I can give a class of 40 minutes because the students can silently watch a particular person speaking for 40 minutes only. So it is already 38 minutes, and 5-10 minutes always go in waiting for the students response, getting their response, and giving some different kind of examples. So overall content based study is delivered in this kind of class for only 30 minutes. So let me talk about that in tomorrow's class. We will be talking about Claude Levi-Strauss and Roman Jacobson, and one more topic I will be discussing in the coming few classes. I have already uploaded a video on semiotics, so then I will be discussing like what is the difference between semiotics and semiology. Then also I will be talking about the other concepts related to structuralism, like Ronald's concept of the death of the author, because let me give you this example here. This is very important.
The Death of the Author is a very famous essay, has already been asked in the exam. This essay comes in his famous book, An Image Music Text. He wrote a book, its title is Image Music Text. In this essay, the writer says that actually meaning is not created by the author. Meaning lies in the reader. That is why the death of the author mean to say that writer has created the words. And when we are discussing today in the structuralist linguistics, that meanings do not have words do not have a meaning in themselves. Then if words do not have a meaning in themselves, then meaning is generated by the person who is the reader, and the reader is coming from a particular community, a particular religion, a particular nationality, a particular gender, and then accordingly the words which have been printed there in the text will be giving him meaning. It means meaning is not there in the text, or that writer who wrote meaning cannot claim that whatever I wrote was meaningful and that particular was my meaning. It means this structuralism is all about what we discuss. What we discuss as per vocabulary is concerned, as per words are concerned, and they say that words are meaningless entities. So it's already 41 minutes, because this is a different kind of class. It is not offline class where we can keep discussing for 2 days continuously, or say 2 hours. So I just restrain myself here. Thank you very much for coming, and you should share the video. Author is dead, the reader is alive. Yes. Author is dead. Death of the author. That's it. Thank you very much for coming. And I'm also coming live at 10 o'clock on Facebook. There I'm discussing literature. Tomorrow I will be discussing on FB the letter of dedication written by fairy queen writer Spencer to his master. And in that he has been discussing the plan of all the fairy queen. So that is also a very important class. And tomorrow in the evening class I'll be discussing further what is structuralism. Yeah, I'll be posting it out. Abhi post kar deta hu. Thank you very much for coming. Thank you.